Hello, you're watching Hornbill TV's Morning Pulse Bulletin. I'm Novi Gone, and here are the news for this hour. India bloc leaders on Tuesday, led by Tamil Nadu Minister Senthil Balaji, protested in Tirupur, demanding measures by the central government for safeguarding textile sector from impact of the 50% export tariff imposed by America. Calling this highly ridiculous, BJP leader Tamilisai Soundararajan said, when the country faces challenges, all should unite. She said, the India alliance cannot do anything other than agitating. கோடி ரூபாய் அந்நிய செலாவணி ஈட்டித் தரும் ஏற்றுமதி தொழிலை பாதுகாக்க பனியன் தொழிலை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடு It's highly ridiculous when the country is facing any challenge. All of them should be united to make our country stronger, because it is not the measure of our Honorable Prime Minister. It's the decision from Trump. Each and everyone is condemning it. So they should be aware of the situation, and I strongly believe, because you would have seen how our Honorable Prime Minister has gained the respect from the leaders of other country. So when he is gaining the respect like this, political parties from his own country talking like this and agitating like this, only people will think bad about the India alliance, because they have to be with the country. Whether it is a war situation or any challenges from different countries, they should be with the country, with the people, with the Prime Minister. And our Honorable Prime Minister is known for facing challenges. For example, during the Corona period, even the developed countries were suffering to regain its economic situation. But our Honorable Prime Minister regained its economic situation and moving towards the third position in the economic status in the world. So our Honorable Prime Minister is known for facing all these challenges. This India alliance cannot do anything than agitating. And Rahul Gandhi cannot do anything, cannot talk anything than like talking lie. He talked about Arun Jaitley, that was a lie. And he was talking about constitution, the years of constitution, that is also a lie. So they are in distress. According to me, country is not in a distress, even economy is not in a distress. Our Honorable Prime Minister, as it is said by our Honorable Finance Minister today, they are so bold enough to face the challenges. But Rahul Gandhi is unable to face even the political challenges. So he is in a distress. Country is not in a distress. Even economy is not in distress. Our Honorable Prime Minister is actually very good enough to face the challenges. And as he said, there will be enhancement of startups, unicorns, and there will be use of the Atmanirbhar Bharat and all our vocal for local. All these, the country will bounce back. In fact, only the citizens of America are now suffering for want of good medicine, for want of diamonds, for want of jewels, and for want of good clothes. And even the court of America has condemned the decision of Trump. So this is a transient situation, and definitely we will bounce back. And I am very confident, because our Honorable Prime Minister will be able to face the challenges as usual. So our country is now in a development path. That's all I can say. Hydrogen bomb next to be placed. Now, our Honorable Prime Minister has countered terrorists. It is more worse than the terrorist bomb or terrorist activity. So when terrorists can be countered, what bombs Rahul Gandhi, definitely it will be a bomb of inactive bomb, or there's a lying bomb. So we cannot say. So what bomb is, even the Election Commission has clearly clarified, only the Election Commission cannot be blamed. Our election list is in the open forum. All the political parties are there to verify it, to add or delete. So it is in the open public forum. So if they are in a distress to hide their defeats, Rahul Gandhi will be talking. We can expect more bombs from. So then bombs can be countered by our Honorable Prime Minister, as he is countering Pakistan terrorists. What's the problem with bomb of Rahul Gandhi? We are calm. Yeah, it is correct. No. The way he is going, it looks like not only an economic trip, it looks like a recreation trip. And till now, what is the data available about the previous trips?
and what were all the investments they have given. And I strongly believe even the Chief Minister is drawing some investment. It is because our Honorable Prime Minister had put the India in the world map in a very greater position. So because of that, not only Tamil Nadu is drawing foreign investments, our Maharashtra, Telangana, Karnataka and Andhra all are doing, but comparatively Tamil Nadu is low. As a Tamilian, I feel very bad because our Chief Minister is not competent enough to do all these things. Only propaganda, only advertisements are going on. I feel that the Chief Minister should be more committed to bring more investments. I think it is only, it looks very superficial, and it looks like only a propaganda trip and an advertisement trip than to economic or investment trip. UB's Additional Chief Secretary, Energy and Alternative Energy Sources, Narendra Bhushan, who participated in Bharat Electricity Global Energy Firm, PowerGen India and Indian Utility Energy Week, said the discussions were of very high quality. Stating that India was standing at a crossroads in the field of energy today, Bhushan said PM Modi has given a mantra through the Panch Amrit principles to achieve net zero in 2070, which India aimed to achieve by 2030 and create 500 gigawatts of energy from renewable sources. He further stated that India has achieved 50% of electricity coming from renewable energy sources in 2025, 5 years before that. आज मैंने उत्तर प्रदेश की ओर से यहाँ पर भारत इलेक्ट्रिसिटी ग्लोबल एनर्जी फॉर्म, पावरजेन इंडिया और इंडियन यूटिलिटी एनर्जी वीक में पार्टिसिपेट किया। ये बहुत ही अच्छे ढंग से एक ऑर्गेनाइज किया हुआ एक प्रोग्राम है, जिसमें एक तरफ जहाँ पर आप एग्जीबिशन, जिसमें सभी प्रकार के यहाँ पर जो है हमारे इंडस्ट्री पार्टनर, पॉलिसी मेकर्स, ग्लोबल पार्टनर्स यहाँ पर आए हुए हैं, और वहाँ पर दूसरी ओर पे जो डिस्कशंस हैं वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आज एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व स्तर पर एक ऐसा विजन हमको दिया है, एक ऐसा मंत्र दिया है पंच अमृत प्रिंसिपल के माध्यम से कि 2070 में हम लोग नेट जीरो अचीव करेंगे, 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट रीन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी को क्रिएट करेंगे, और एक उनमें से प्रिंसिपल हमने 5 वर्ष पहले, जो हमने लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया था, उससे 5 वर्ष पहले 2025 में ही उसको अचीव कर लिया है कि 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ कमिंग फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। उत्तर प्रदेश भी इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ मिलकर खड़ा हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 ट्रिलियन का जो एक लक्ष्य दिया है, उसके बारे में आज इस कॉन्फ्रेंस में मैंने सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बताया हुआ। यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, ग्लोबल पार्टनर्स आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के विजन के बारे में उनको बताया कि उत्तर प्रदेश में भी आकर इसके बारे में वो इन्वेस्ट करें। सोलर एनर्जी हमारे उत्तर प्रदेश में हमने लगभग 22 गीगावाट का एक लक्ष्य स्थापित किया हुआ है, परंतु उसके अलावा जो यूपीपीसीएल हमारी यूटिलिटी है वो 32 गीगावाट सभी का मिक्स करके, चाहे वह सोलर है, विंड एनर्जी है, बायोमास बेस्ड एनर्जी है, उसका प्रिक्योरमेंट करेंगे। और उत्तर प्रदेश ने भी इसमें बहुत सारी पॉलिसीज को अनाउंस किया है। 22 गीगावाट में पीएम सूर्य घर में हम लोग यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर अभी तीसरे नंबर पर हैं, पिछले 2 महीने से राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश जो है पर डे इंस्टॉलेशन से नंबर 1 पर आ रहा है। पीएम कुसुम योजना में भी जो हमारा 4 साल का, पूरे 5 साल का टारगेट था, उसमें 3,70,000 हमने एक ही वर्ष में अचीव कर लिया। इसमें हमारा जो किसान है न केवल हमारा अन्नदाता रहेगा, और वो एनर्जी भी पैदा करेगा, और एनर्जी पैदा करके ग्रिड को भी देगा। इस प्रकार से सोलर एनर्जी, जिसका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में है, और खासतौर से क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए जिस प्रकार के क्लीन एनर्जी सोर्सेज की जरूरत है, तो उसमें सोलर एनर्जी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और उत्तर प्रदेश और भारत इसमें बहुत तेजी से विकास की। Unemployment in Nagaland took center stage at the 7th session of the 14th Nagaland Legislative Assembly yesterday, as Advisor Hekani Jakalu initiated a discussion under Rule 50 on matters of urgent public importance. Highlighting the statistics, Jakalu said Nagaland continues to record one of the highest unemployment rates in the country at 7.1% against the national average of 3.5%, with youth unemployment between the age group of 15 to 24 soaring to 27.1% in 2023 to 2024. Calling unemployment a symptom,
and unemployability to illness, she pointed to gaps in the education system, lack of skill training and societal pressure that pushes youth into seeking only government jobs. She pressed for urgent interventions such as upgrading education, expanding vocational training, creating apprenticeships, promoting entrepreneurship and ensuring better infrastructure in the power and road. Speaker, sir, for giving me the time to speak on matter of urgent public importance under Rule 50 on the topic unemployment in Nagaland. Nagaland has one of the youngest population in the country. If we look at census 2011, it is 13-year-old data, but it still will give us a rough idea of the present situation. If we look at the census 2011, out of the population of 19.8 lakh, people below the age of 35 constitute about 14 lakh. And the youth between the age of 15 and 35 constitute about 40%, which is approximately 8 lakh of the population. Over the next 15 to 20 years, this group will be at the center, and this group will be the main drivers of the state, whether it's regards to social, political, or economic affairs of the state. The Nagaland Vikshit Nagaland that we are looking at, Vikshit Nagaland 2047, will really depend on how we shape and mold the youth of today. The youth in our state is confronted with various challenges, and one being the unemployment challenge. The educated youth and the labor force are increasing day by day, but the growth of employment is very slow. That is also because of the slow pace of development in the private sector. And the other thing, government service jobs are saturated. Unemployment is a very complex issue, not only for our state, but for the entire country and the world over. When we look at our youth, we have a talented pool of young people who are creative, who are innovative, and with a very high entrepreneurial spirit. But when we look at the statistics, Nagaland has consistently been shown as one of the highest unemployment rate. In the recent periodic labor force survey, for the latest data, it shows Nagaland has the highest unemployment rate of 7.1, much above the national average of 3.5%. And on top of that, the youth between the age of 15 and 24, our statistics show that it's the highest with about 27%. But again, what is also little concerning is when we look at the same data of the same survey in 2019 and 20, we see that the unemployment rate was at 25.7%. And then in 22-23, it went down to 4.3%. And now in 23-24, it has increased by 65% to 27.1%. Now let us try to first understand how is this statistic derived at. Of course, there are many sources, but I am assuming one of the main sources is the employment exchange of our state. A few months back, the government had introduced a program for self-employment for youth through the scooter taxi services. And then the criteria was you have to get an unemployment certificate from the employment exchange. There we had hundreds and hundreds of young people queuing up outside the office to get the unemployment certificate. Now this artificially inflates employment figures, as many engaged in private or informal sector may still identify themselves as unemployed. So statistics could be misleading. Firstly, what we
need to understand is the meaning of unemployment. And the second question we need to understand is, are our youth unemployed or are our youth unemployable? Unemployment is the lack of job. And unemployability is when individuals are actively seeking for jobs but are not being able to get because they lack hard skills, soft skills, or some technical competencies. When we look at the recent Forest Guard advertisement, for 154 posts, I'm told about 23,000 plus young people applied. Of course, this number is very worrying. But when we look at the advertisement, we will see that the criteria was very simple. For the advanced tribe, class 10 pass. For the backward tribe, metric appeared. Very simple criteria. Here many questions arise. How many of these job seekers are earning their livelihood through businesses or through some income generating enterprise? How many of these youths are actually qualified in some skills? At the face of it, I doubt majority of those who fall under this category would not have applied. So the question again is, these thousands of young people who have applied for this job, were they or are they unemployed or are they unemployable? Looking at the general context, the first thing that we need to fix is the unemployability problem. So in simple terms, unemployment is a symptom, but unemployability is the illness. And so we as a whole, we need to first fix what the illness is, and that is the unemployability problem. The basic foundation of any young people as they prepare for the job market is the education system. And we know that the education system, not only in Nagaland, but entire country, there's a total disconnect between what they learn and once they're ready for the job market. And though young people may come out, pass out with certificates, it becomes very, very difficult to fit into the job market. I don't want to get into details of the education because I have especially 3 of our members who are from the education domain who will be speaking on it, but this is the observation. Today, when you look at the job market and the industries around, everyone is beginning to adopt new technologies and special roles. And our education system is still struggling to keep pace with it. Many young people enter the workforce with theoretical knowledge, and like I mentioned earlier, with a certificate, but really not the required skill that is needed for the job market and the modern employers. Today, we are talking about artificial intelligence, we're talking about blockchain, we're talking about Internet of Things. This is technology. Technology is moving so fast that we just have no other option but to keep pace with it. Like many sectors, the thread and knitting industry in Tamil Nadu, Tirupur and diamond and gem jewellery market in Surat are facing uncertainty due to the 50% tariffs imposed by the US. Production of thread and knitting has been slowed down and jobs of many are at risk. The industry currently exports about 10% to the US. Meanwhile, the diamond and gem industry market in Surat are facing the same challenges. A diamond trader said there are no new orders since 1 week and products are getting very expensive. He, however, said they are exploring other markets and not relying on US. देखिए, जब तक 25% टैरिफ था तब तक तो थोड़ा बहुत चल रहा था, मतलब 25% लगाया तब से दिक्कत तो थी, मगर थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट चल रहा था, थोड़ा बहुत काम भी चल रहा था। मगर जब से ये 50% टैरिफ लगाया और उसको समझो 1 वीक हो गया है, तो तब से समझो
पूरे मतलब समझो जो मध्यम वर्ग के व्यापारी है उन लोगों का एक्सपोर्ट और उन लोगों का काम जो यूएस से डायरेक्ट काम चलता था वो सडनली अभी पूरा एक वीक से पूरा स्टॉप हो गया है। और क्या वहाँ से ऑर्डर किस तरीके से आ रहे थे और अभी ऑर्डर का क्या रिस्पॉन्स है? देखिए ऑर्डर तो वहाँ के कस्टमर को भी लगता था कि भाई जब से ये 50% टैरिफ लगेगा तो माल उन लोगों को भी महंगा होने वाला था, तो उन लोगों ने पहले तो ओवर स्टॉक कर दिया है। मगर अभी नया ऑर्डर जो भी आ रहा है तो उन लोगों को पहले से ही फिक्स करना पड़ेगा कि उनको ही 50% टैरिफ लग जाएगा तो माल भी 50% महंगा ही लेना पड़ेगा। तो वैसे ही ऑर्डर आएंगे, जिसको कंफर्म ऑर्डर है वही ऑर्डर देगा, कोई स्टॉक के लिए डायमंड नहीं मंगवाएगा। अभी ऐसा हो गया है। तो क्या वहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं अभी एक सप्ताह से? एक सप्ताह से नहीं, ऑर्डर नहीं है। वहाँ के भी मतलब समझो वो लोग भी कस्टमर है, वो भी सोच रहे हैं, उनको भी अपनी गवर्नमेंट से मतलब समझो नाराज है कि भाई उनको ही माल महंगा आ रहा है, तो वो लोग भी अभी वेट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि भाई अगर कोई नेगोशिएशन हो रहा है अगर टैरिफ में तो वो लोग वेट कर रहे हैं कि भाई अभी 10 दिन 15 दिन या 1 महीना रुक जाए, उसके बाद ऑर्डर देंगे। तो क्या बात हो रही है वहाँ के व्यापारियों से आपकी, क्या आश्वासन मिल रहा है आप एक दूसरे से? बस वही चल रहा है कि वहाँ की सरकार से भी वो लोग नाखुश है क्योंकि उनको भी माल महंगा आ रहा है और पूरा समझो उनका भी जो चैनल है कस्टमर का जो शोरूम लेके बैठे है तो उनको भी वहाँ से ऑर्डर नहीं कंप्लीट हो रहा है और उनको भी माल कस्टमर को ऑलरेडी महंगा देना पड़ता है। तो वो उन लोगों की भी इतनी प्रॉब्लम है, जहाँ अपने को प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट में तो वहाँ के कस्टमर को भी प्रॉब्लम है। तो अभी जो आपके यहाँ पे जो कंपनी है उस कंपनी में कैसे काम हो रहा है, कैसे आप पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका का जो आपका ऑर्डर था वो तो बंद हो चुका है, तो डोमेस्टिक मार्केट और दूसरे अदर कंट्री में क्या रिस्पॉन्स है आपके? देखिए अभी टैरिफ की वजह से यूएस का तो एक्सपोर्ट अभी हमारा रुक गया है, मगर जो इतना फैक्ट्री लेके बैठे हैं, सब कारीगर वर्ग को लेके बैठे हैं, तो सबका सोच के चलना पड़ेगा। तो इधर अपना इंडिया की देखिए कि अपनी इतनी आबादी वाला देश है और इतना अपना समझो इंडिया का भी ज्वेलरी मार्केट बहुत बड़ा है, तो इधर डोमेस्टिक में भी हम ट्राई कर रहे हैं और रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है और अदर कंट्री में भी हम ट्राई कर रहे हैं, वहाँ भी एक्सपोर्ट और हो रहा है और काम भी बढ़ेगा ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं कि यूएस के भरोसे ही बैठे हैं। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, क्या उम्मीद है आपको और आप क्या कहेंगे इस मामले में जो 50% इतनी बड़ी टैरिफ है? 50% टैरिफ है वो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के लिए और डायमंड इंडस्ट्रीज के लिए वो समझो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ का काम रुका हुआ है। ज्वेलरी ऑर्डर भी सबके बड़े बड़े ऑर्डर भी कैंसिल हुए हैं ये टैरिफ की वजह से। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरे सब मतलब समझो मैन्युफैक्चरिंग से लेके ट्रेडिंग तक सबको परेशानी हो रही है, पूरी इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम आ रही है। तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अपनी गवर्नमेंट को भी और वहाँ की गवर्नमेंट को भी कुछ बैठ के कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा और नेगोशिएशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये धंधा ऐसे नहीं चलेगा। अमेरिका जिस तरीके से भारत पर प्रेशर करके और उन पर अलग अलग बातें करके जो टैरिफ लगाए उस पर क्या कहेंगे? देखिए वो टैरिफ और वो जो उसका प्रेशर है, यूएस का प्रेशर है, वो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए पहले तो हमारे लिए अपना नेशन फर्स्ट है, धंधा भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, मगर हम कुछ नया स्कोप ढूंढेंगे। मगर टैरिफ की वजह से या उसकी वजह से अपना कोई जो है जो अपना टैरिफ की वजह से जो देश के लिए जो कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करते हैं कि भाई उन्होंने नेगोशिएशन नहीं किया है। नहीं, अपने लिए नेशन फर्स्ट है और धंधा भी चलेगा, नए स्कोप ढूंढेंगे, मगर वहां से कोई नेगोशिएशन करेंगे तो धंधा शुरू होगा। अभी तो डायमंड व्यापार में काफी असर हुआ है। जो भी बाहर से हमारा अमेरिका का ऑर्डर है सब कैंसिल हो रहा है और अभी नया ऑर्डर आ भी नहीं रहा है, तो डायमंड बिजनेस में काफी इसकी दिक्कत हुई है। क्या इसे कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? दूसरा क्या कुछ ऑप्शन है? हाँ, अभी हम ढूंढ रहे हैं कि अमेरिका को छोड़ के आगे कहाँ कहाँ हम व्यापार कर सके, ग्लोबल मार्केट में हम कहाँ कहाँ पहुंच सके, कहाँ कहाँ इसकी रिक्वायर्ड है, सब उस पर हमारा वर्क सब हो रहा है। क्यों अमेरिका के जो व्यापारी है उससे क्या बात की है, वो क्यों नहीं खरीदना चाहते हैं? 50% टैरिफ जो लगाया है ट्रम्प सरकार ने, उससे काफी महंगा हो चुका है डायमंड। तो उसके हिसाब से बाकी जो देश से डायमंड इंपोर्ट होता है वहां से अपना इंडिया का डायमंड थोड़ा महंगा पड़ता है, तो थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो जिस तरीके से टैरिफ लगने के बाद जो अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की ट्राई कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या सोच है आपकी? उस पर यही कहना चाहूंगा कि ये जो बिजनेस है उसको बिजनेस की तरह रखे तो अच्छा है। ट्रम्प सरकार 50% टैरिफ लगा के जो भारत को दबाना चाहता है वो गलत बात है, और हम लोग ये चाहते हैं कि
उसके दोनों भारत देश और अमेरिका दोनों मिलके इस पे बैठक करके कुछ तीसरा रास्ता निकाले। अभी जो आपका व्यापार चल रहा है उसमें ऑर्डर नहीं आ रहे हैं दूसरे, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप पूरे धंधे को? अभी तो हम ऐसे मैनेज कर रहे हैं कि हम अपने इंडिया में कहाँ कहाँ बिकता है, क्या होता है और बाहर कौन से कंट्री में जाता है, वहाँ सब देखते हैं। बाकी अभी अमेरिका को हमने छोड़ा है। वहाँ के व्यापारियों से कुछ आपकी बात हुई, क्या कहा उन्होंने? बस यही व्यापारी यही कहना चाहते हैं कि इसको हम कुछ हल बीच का हल निकले और हमारा व्यापार आगे बढ़े, कंटिन्यू रहे। आपको क्या उम्मीद है? हमारा यही उम्मीद है कि अपना भारत सरकार जो है अमेरिका के साथ जो भी है बातचीत करके इसका रास्ता निकाले, अच्छा से उसका जो भी है वो रास्ता। That's all for now. Keep watching Hornbill TV.